When you get into programming, you not just learn how to code, you learn the art of thinking. You learn the art of thinking about creating different logic based solutions for different life based problems. And to develop this very art of thinking, programmers dives into the world of competitive programming. So hey everyone, I'm Saumya Vatsa, and in this video we are going to talk about competitive programming in full detail. We are going to talk about how to get into competitive programming, how to prepare for competitive programming, and what are the benefits of competitive programming. So watch this video till the very end and do not forget to subscribe to this channel and also press the bell button to get all the videos notification. Programming is not just a skill, it is a mental exercise, it is a mental sport. And when this mental sport is played on the internet involving many programmers, then this mental exercise is called competitive programming. There are various platforms where these contests are held. The popular ones are Hacker Earth, Hacker Rank, Code Forces, Lead Code, Code Wars. Now, how competitive programming works? First, you sign up to these platforms and start participating in these contests. You get questions and you have to write efficient and optimal solutions for these questions in the fixed time. One thing to note here is that you not only need to solve the problem, you have to solve the problem in the most efficient manner. You need to focus on the time and space complexities, and at the end you get your rank depending upon the efficiency of your code. For example, let's just say you and your friend are participating in a competitive program contest, and you and your friend both wrote code for the same program. Now let's just say that your program takes 2 seconds to run and your friend's program takes 1 second to run. In this case, आपके दोस्त का जो कोड है वो आपसे एफिशिएंट है, उनकी रैंक आपसे ज़्यादा ऊपर होगी. एंड लेट्स जस्ट से कि आपका कोड जो है वो 2 MB की स्पेस ले रहा है, बट आपके दोस्त का जो कोड है वो 4 MB की स्पेस ले रहा है. तो यहाँ पे आपका कोड कम स्पेस ले रहा है, तो इस वजह से आपका रैंक थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज, एंड देन उनको सबको मिला के आपका एक रैंक देते हैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. Now, to get into competitive programming, the first thing you need to do is choose a programming language. You can either choose C++, Java or Python, but I will suggest you to go for C++ or Java because इनके कम्युनिटी सपोर्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं. स्पेशली C++ का जो कम्युनिटी सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है. तो आप अगर कहीं भी फंस रहे होगे, आपको कहीं भी दिक्कत आ रही होगी, प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, बग्स आ रहे होंगे आपके प्रोग्राम में, तो वो आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे अगर आप C++ लेते हो. Now the second thing you need to do is understand the concept of time and space complexities. I just told you ना कि आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना CP के अंदर में, आपको एक efficient कोड लिखना है. And for that you need to know that what is time complexity and what is space complexity. So आपको ये सीखना पड़ेगा. And the next thing is you have to do the DSA, data structures and algorithms. DSA is the heart of programming and you just cannot ignore it. As a programmer, you need to know when to apply, where to apply and what to apply. And this is the most important thing in programming. When to apply, where to apply and what to apply. So you need to learn DSA and you need to do the whole data structures and algorithms. When you have done all these things, आपने programming language choose कर लिया, आपने time and space complexities के concept को learn कर लिया, आपने DSA सीख लिया, then you need to start participating in these contests. You need to start taking challenges and problems and try to solve them in the most efficient manner. In the starting, you will find that आपसे कोड बन ही नहीं रहे होंगे, आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बट यू डोंट नीड टू डिमोटिवेट योरसेल्फ. आपको डिमोटिवेट नहीं होना है एंड आपको ट्राई करते रहना है. लेट्स जस्ट से कि आपने कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, उसमें 5 क्वेश्चन है, आपसे सिर्फ 2 बने, तो उस कॉन्टेस्ट के ख़त्म होते ही आपको ट्राई करना है कि आप 3rd क्वेश्चन को सॉल्व करो, 4th क्वेश्चन को सॉल्व करो, एंड इसी तरह आप सीखोगे एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल लर्न एंड यू विल इम्प्रूव. सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ऐसा चीज़ नहीं है जो आप 1 महीने 2 महीने में कर लोगे. आपको एक साल कम से कम तो दिमाग में सोच के चलना पड़ेगा कि मेरे 1 साल इधर जा रहे होंगे, तब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे. नाउ वी सॉ टिल नाउ that how competitive programming works and how we can get into competitive programming, how we can prepare ourselves for competitive programming. But what are the benefits of competitive programming? Now let's just see that. As I said in the starting of the video,
Programming is not just writing the code, it's a mental exercise, it is a mental sport. So when you get into competitive programming, आप चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हो, तो आपको मेंटल एक्सरसाइज की एक हैबिट डेवलप हो जाती है, मेंटल स्पोर्ट की एक हैबिट डेवलप हो जाती है. एंड ये बहुत ही अच्छा है अगर आप प्रोग्रामिंग में के करियर में घुसना चाहते हो, अगर आपको फुल टाइम प्रोग्रामर बनना है किसी कंपनी में या फिर खुद की फ्रीलांसिंग करनी है. Now the second benefit is it will prepare you for technical interviews. The questions asked in CP are much similar to the questions asked in technical interviews. So when you participate into CP context, at the same time you are also developing and preparing yourself for technical interviews for your placement. The third benefit is it is the most easiest method to demonstrate your skill publicly. जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छा रैंक करते हो तो पूरी वर्ल्ड, जितने भी लोग उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, सबको पता चलता है कि ये इंसान इतना अच्छा प्रोग्रामर है, ये इंसान इतना अच्छा कोडर है. नाउ द फोर्थ बेनिफिट इज इट्स द बेस्ट वे टू गेट इनटू फंडामेंटल्स, टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स एंड टू रिवाइज ऑल दैट थिंग्स लाइक DSA एंड एवरीथिंग. जब आप CP में जाते हो, मैंने बताया ही कि बिना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किए आप अच्छा रैंक नहीं कर सकते, आप अच्छा नहीं कर सकते CP में. सो व्हेन यू गेट इनटू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आपको अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखने होते हैं. एंड जब आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखते हो तो आप किसी भी जगह फिट हो सकते हो, किसी भी रोल में, किसी भी जॉब में फिट हो सकते हो. एंड दैट इज़ द बेस्ट स्टेप फॉर योर करियर. नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ दैट आप अपने रैंक को अपने CV में डाल सकते हो, अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो. एंड बाय डूइंग दैट आप अपने इंटरव्यूअर को बता रहे हो कि मैं इतना अच्छा प्रोग्रामर हूँ. आपने अपनी पब्लिकली अपनी स्किल को डिमॉन्स्ट्रेट कर रखा है, जिससे आपको एक एज मिल जाता है अपने प्लेसमेंट में. सो दीज वर ऑल द थिंग्स अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. वी टॉक्ड अबाउट how to get into competitive programming, we talked about how competitive programming works, and we also talked about the benefits of competitive programming. So if you watch this video till now, then please hit the like button, please share this video with your friends and family. Also, if you really like this one, then please hit the subscribe button, please hit the bell button to get all the videos notification. And if you are into web development, then you should go and watch this playlist. इस playlist में मैंने सिर्फ web development से related सारी videos को डाल रखा है. Especially ये playlist सिर्फ web development के ऊपर बना है. So you can go and check that out. And this is it for this one. I will see you in the next one. Till then, have a good day.